Came his medical books and a feverish reference to index began. What poison did you say, sir? Barium carbonate. Ah, yes, barium salt. Ah, barium carbonate. Symptoms: paralysis. Treatment: injection of just a minute, sir. I will bring my syringe and the medicine. So I dashed back to the car. Bruno still floundering about on his stumps, but clearly weakening rapidly. Some vomiting, heavy breathing with having flanks and gaping mouth. अब क्या हुआ कि जो ब्रूनो है उसको उसने कौन सा जहर खाया था का ये बैरियम कार्बोनेट खाया था जिससे उसको उल्टी भी हो रही थी. Hold him, everybody engulfed so hypodermic. Bruno squeals 10 cc of the antidote enters his system without a drop being wasted. 10 minutes later, condition unchanged. Another 10 cc injected. 10 minutes later, breathing less and stertorous. Bruno can move his arms and legs a little, although he cannot stand yet. So 30 minutes later, Bruno gets up and has a great feed. He looks at us disdainfully, as much as to say, what is barium carbonate to a big to a big black bear like me? Bruno is still eating. अब क्या हुआ कि पहले इसको 10 सीसी का इंजेक्शन दिया तो उससे कुछ नहीं हुआ, फिर दूसरा दिया तो फिर उसको थोड़ा सा होश आया, तो फिर वो खाने में लग गया और वो खाता ही गया. और जैसे कि वो कह रहा हो कि ये जो बैरियम कार्बोनेट है उसका क्या बिगाड़ सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता. Another time he found nearly 1 gallon of all engine oil, which I had drained from the sumps of the stud baker, and so was keeping as a weapon against the inroads of termites. He promptly drank the lot, but it had no ill effects whatever. अब क्या हुआ कि बाद में उसने 1 गैलन तेल पी लिया, मतलब ऑयल पी लिया उसने, और इस बार भी उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस बार भी उसको कुछ नहीं हुआ. The months rolled on and Bruno had grown many times the size he was when he came. So he had equal the initiation in height and had even outgrown them, but was just as sweet, just as mischievous, just as playful, and he was very fond of us all. And above all, he loved my wife, and she loved him too. She had changed his name from Bruno to Baba, a Hindustani word signifying small boy, and he could do a few tricks too. At the command Baba wrestle, Baba box, and he vigorously tackled anyone who came forward and rough and tumble. So give him a stick and say Baba for the hold gun, and he pointed the stick at you. Ask him, Baba, where is baby? And he immediately produced and cradled affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed, but because of the tenant's children, poor Bruno, Baba had to be kept changed most of the टाइम. अब क्या हुआ कि जो बाबा है ना, जो मेरा मतलब है जो ब्रूनो है वो बड़ा हो गया था, और जो ब्रूनो है वो ऑथर की वाइफ से बहुत प्यार करता था, और ऑथर की वाइफ भी ब्रूनो से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. अब उसने क्या किया, उसने उस भालू का नाम ब्रूनो से रख के बाबा कर दिया, जो कि एक हिंदुस्तानी नेम है जिसका मतलब है क्या होता है कि छोटा बच्चा. ठीक है, तो वो जो भी कहती थी वो करने लग जाता था. जैसे कि उसको कहती थी कि बाबा स्टिक उठाओ और पॉइंट करो, यानी एक छोटे बच्चे करते हैं ना, जैसे कि कोई गन लकड़ी की गन सब बना के ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि हाँ भाई ये गन है, तो वैसे ही वो आप पर पॉइंट कर देता है. ठीक है, और वो कहते हैं कि बाबा कुश्ती करो, बाबा लड़ाई करो, तो वो कहते हैं और वो वैसा ही करने लग जाता है. Then my son and I advised my wife, and friends advised her too, to give Baba to the zoo at Mysore. He was getting too big to keep it at home, and after some weeks of such advice, she at last consented hesitantly, and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo. Did he want a tame bear for his collection? He replied, yes. The zoo sent a cage from Mysore in a lorry, a distance of 87 miles, and Baba was packed off. अब क्या हुआ कि बाबा ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था, उसको घर पे रखना मतलब एक सुरक्षित
निर्णय नहीं होता। तो बहुत मुश्किल से ऑथर की वाइफ मानी और उन्होंने ज़ू वालों को फ़ोन किया, चिड़ियाघर वालों को फ़ोन किया और पूछा कि क्या आपको एक भालू की ज़रूरत है। तो वहाँ से आंसर हाँ में आया, तो हाँ उनको एक भालू की ज़रूरत है। तो वहाँ से एक गाड़ी भी आ गई इसको लेने के लिए। So we all missed him greatly, but in a sense we were relieved. My wife was inconsolable. She wept and fretted, and for the first few days she would not eat a thing. Then she wrote a number of letters to the curator. How was Baba? So back came the replies. So well, but fretting, he refuses food too. अब क्या होता है कि ऑथर तो जैसे ही ऑथर और उसके जो बच्चे हैं वो कैसे न कैसे करके बेचारे अपने आप को शांत कर लेते हैं, अपने मन को मना लेते हैं, लेकिन जो ऑथर की वाइफ है वो नहीं मना पाती है। ऑथर की वाइफ है जो खाना पीना छोड़ देती है ब्रूनो के चक्कर में। ब्रूनो भी वहाँ पर ब्रूनो के पास जब वो कॉल करती है वहाँ पे चिड़ियाघर में, जब पूछती है ब्रूनो के बारे में, तो वहाँ से भी आंसर आता है कि ब्रूनो ने भी खाना पीना छोड़ दिया है। And after that, friends visiting Mysore were back to make a point of going to the zoo and sing. So how Baba was doing, getting along. They started that he was well, but looked very thin and sad. All the kids at the zoo said he was fretting for, and for 3 months I managed to restrain my wife from visiting Mysore. So then she said one day, I must see Baba. So either you take me or by car, or I will go myself by bus or train. So I took her by car. और वो जब भी कोई इसके दोस्त वगैरह जाते थे कि वो कहते थे कि वही उनको जू उससे बाबा के बारे में, जो बाबा से जू में मिलने ज़रूर जाना है। ठीक है, तो फिर एक दिन वो बोली कि ऑथर से कि या तो मुझे तुम ले जाओ, नहीं तो मैं बस या ट्रेन पकड़ कर वहाँ पर चली जाऊँगी बाबा से मिलने के लिए। तो क्या होता है कि ऑथर उसको कार में बैठा कर बाबा के पास ले जाता है। Friends had conjectured that the bear would not recognize her. So I had thought so too, but while she was yet some yards from his gaze, Baba saw her and recognized her. He howled and with happiness. She ran up to him, patted him through the bars, and he stood on his head in her delight. Now for the next 3 hours she would not leave the cage. She gave her tea, lemonade, cakes, ice cream, and what not. Then closing time came and we had to leave. My wife cried bitterly. Baba cried bitterly. Even the hardened curator and keepers felt depressed. As for me, I had so reconciled myself to what I knew was going to happen next. अब क्या हुआ कि जब ऑथर की वाइफ उससे मिलती है तो वो 3 घंटे तक उसके पिंजरे से दूरी नहीं हटती है। वो उसको बहुत सारी चीज़ें खिलाती पिलाती रहती है। और अब जो जू है उसको बंद करने का टाइम आ जाता है, और अब क्या होता है कि वहाँ के जो क्यूरेटर है और जो मैनेजर है वो भी बेचारा डिप्रेस हो जाते हैं कि देखो वो ये औरत है कितना प्यार करती है इससे और इसको छोड़ नहीं रही है, और इनको जो चिड़ियाघर है वो उसको बंद करने का भी टाइम आ गया। ओके क्लास, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच।